Let us discuss vieta rule. Vieta rule. Vieta's rule. A relation between roots and coefficient. A relation between roots and coefficients of equations. If ax square plus bx plus c is equal to 0 and a is not equal to 0 and a, b, c are complex numbers, then if alpha and beta are the roots of this equation, then alpha plus beta is equal to minus b upon a and alpha beta is equal to c by a. If the equation is cubic, that is ax cube plus bx square plus cx plus d is equal to 0, where a is not equal to 0 and a, b, c and d are complex numbers, then if this equation has roots alpha, beta and gamma, then alpha plus beta plus gamma is equal to minus b upon a and alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is equal to c by a and alpha beta gamma is equal to minus d upon a. यदि इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं तो nth डिग्री इक्वेशन के लिए हम लिख सकते हैं कि if the equation is a naught x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus dot dot plus a n minus 1 x plus a n is equal to 0, where a naught is not equal to 0 and a naught, a1, a2 and dot dot an are complex numbers. Then since this equation is of nth degree, so it has n roots, real or complex. So let if these roots are alpha 1, alpha 2, alpha 3 and dot dot alpha n, then sum of the roots alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 plus dot dot plus alpha n is equal to minus of a1 upon a naught and इस तरह से sum of product of roots taken 2 at a time and sum of product of roots taken 3 at a time and so on, and finally product of all the roots alpha 1 into alpha 2 into alpha 3 into dot dot into alpha n is equal to minus 1 to the power n into an upon a naught. ये जो है आपके सामने जो बोर्ड पर लिखा गया है, ये विeta रूल है. आइए इस पर एक दो एग्जाम्पल हम कंसिडर करेंगे इसको अप्लाई करते हुए. लेट अस कंसिडर ए क्वेश्चन. एग्जाम्पल, if all the four roots of the equation x to the power 4 minus 4x cube plus ax square minus bx plus 1 is equal to 0 are positive,
are positive, then find the value of A and B. Now come to the solution part. Solution. Here it is given that all the four roots are positive. So and the equation is of fourth degree. So we can take let alpha, beta, gamma and delta are the roots. According to question, all these roots are positive. So alpha, beta, gamma, delta are positive. Now applying beta's rule, we can write here alpha plus beta plus gamma plus delta is equal to minus b upon a, that is minus of minus 4 by 1, that is 4. And product of all the roots alpha into beta into gamma into delta is equal to minus plus minus plus, that is 1 by 1. So 1 upon 1, that is 1. Here observe that this can be written as alpha plus beta plus gamma plus delta by 4 is equal to 1. Now divide this by 4, and here since alpha, beta, gamma, delta are positive, so we can write alpha into beta into gamma into delta to the power 1 by 4 is also 1 by 1 by 4, that is 1 in real domain. Here some arithmetic mean of these four numbers alpha, beta, gamma and delta is equal to 1, and their geometric mean alpha into beta into gamma into delta whole to the power 1 by 4 is equal to 1. So we can write arithmetic mean AM of alpha, beta, gamma, delta is equal to geometric mean GM of alpha, beta, gamma and delta. It means कि EM of all these four numbers are equal to GM of all these four numbers. It means कि ये तभी संभव है जब all these numbers are equal, which implies alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to delta. Gamma is equal to delta. Now if alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to delta, then by this equation we can write this implies alpha plus alpha plus alpha plus alpha is equal to 4, and which implies 4 times alpha is equal to 4, and this implies alpha is equal to 1. It means all the four roots are 1. It means here the leading coefficient is 1. So we can write given equation, that is x to the power 4 minus 4 times x cube plus ax square minus bx plus 1 can be written as x minus 1 whole to the power 4. Now expanding RHS on binomial theorem, so we can write x to the power 4 minus 4 times x cube plus 6 times x square minus 4 times x and plus 1. So now comparing the coefficient on comparing the coefficients of like power of x
x, like power of x, we have what? Here coefficient of x square is 6, so here is a, so a is equal to 6, and coefficient of x is equal to -4, so minus b is equal to -4, that is therefore b is equal to 4. So a is equal to 6 and b is equal to 4, and this is the answer. Now consider another example of a quadratic equation. Suppose that a quadratic polynomial, polynomial p of x is equal to ax square plus bx plus c is equal c has positive coefficients a, b and c, which are in AP in that order, full stop. If p of x is equal to 0 has integer roots alpha and beta, then find the value of alpha plus beta plus alpha beta. Now come to the solution part. Solution. Let p of x is equal to ax square plus bx plus c is equal to 0. Set equation number 1. If this equation has two roots alpha and beta, which are integers, then by beta's rule we can write down here relation between roots and coefficient. Alpha plus beta is equal to minus b by a, and alpha into beta is equal to c by a. Notice that here it is given that coefficient a, b and c are positive. It means sum of the roots are negative and their product is positive. It is possible only when both the roots alpha and beta are negative. ये जब दोनों नेगेटिव होगा तभी ये संभव होगा, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा. जब ये दोनों नेगेटिव होगा तो सम नेगेटिव हो जाएगा और दोनों का नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, जो कि पॉजिटिव दिया गया है. सो यहाँ पे कंक्लूजन लिखेंगे कि as a greater than 0, b greater than 0, c greater than 0, which implies alpha must be negative and beta must be negative. Also it is given that कि ये जो roots है वो integer है. क्या है? Integer है. It means alpha and beta belongs to Z, that is set of integers. Now also it is given that कि ये जो कोफिशिएंट्स ए बी सी है विच आर इन एपी में है इन दैट ऑर्डर. इट मीन्स it is given that a, b, c are in AP. तो अगर ये ABC AP में है तो हम किसी कांस्टेंट नंबर a से हम अगर डिवाइड करेंगे स्टिल दे आर इन AP. सो विच इम्प्लाइज a by a, b by a, c by a are also in AP होगा, also in AP.
So a by a is nothing but 1. So this implies 1 comma b by a comma c by a are in AP. अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि b by a को we can replace minus of alpha plus beta, and c by a can be replaced by alpha beta, alpha into beta. So इस थर्ड लाइन के नीचे आप लिख सकते हैं कि which implies 1 into minus alpha plus beta comma alpha beta are in AP, according to question. It means कि अगर 3 numbers alpha this and this are in AP, it means sum of this and this must be twice of this. It means आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 plus alpha into beta is equal to 2 times of minus alpha plus beta. आप ये लिख सकते हैं. Let us proceed from here. अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 plus alpha beta is equal to minus 2 alpha minus 2 beta. अब हम यहाँ पे चाहते हैं कि बीटा को या तो अल्फ़ा के टर्म में एक्सप्रेस कर दें या अल्फ़ा को बीटा के टर्म में एक्सप्रेस कर दें. तो लेट अस इसको आप 2 बीटा को इधर लेफ्ट साइड लाइए और 1 को उधर राइट साइड ले जाइए. तो आप देख सकते हैं, या अल्फ़ा बीटा को उधर ले जाइए और इसको इधर ले जाइए. तो 1 plus 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू वी कैन राइट माइनस 2 बीटा और माइनस अल्फ़ा बीटा. यहाँ पे बीटा अगर आप कॉमन लेते हैं तो ये -2 और माइनस अल्फ़ा होगा और इधर 2 अल्फ़ा प्लस 1. सो आप यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 अल्फ़ा प्लस 1 बाई अल्फ़ा प्लस 2 और माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं. तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ 2 अल्फ़ा प्लस 1 बाई अल्फ़ा प्लस 2. अगर आप देखें कि इसको थोड़ा सा अगर हम रीअरेंज कर दें इस टर्म को, इफ़ आई रीअरेंज दिस टर्म, तो वी कैन राइट हियर बीटा कैन बी रिटेन एज माइनस ऑफ 2 अल्फ़ा प्लस 2 2 अल्फ़ा प्लस 2 नहीं, 2 अल्फ़ा प्लस 4. अल्फ़ा प्लस 2 एज ए फैक्टर लाना है तो 4 लिख देते हैं. यहाँ प्लस 1 है तो यहाँ -3 लिखना पड़ेगा ताकि ये बैलेंस्ड हो जाए, 2 अल्फ़ा प्लस 1 ही रहे और इधर अल्फ़ा प्लस 2. आप यहाँ देख सकते हैं माइनस, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो लिखेंगे अल्फ़ा प्लस 2 और -3 बटा अल्फ़ा प्लस 2. यहाँ पे अगर सेपरेट करें दिस टर्म डिवाइडेड बाय दिस टर्म एंड दिस टर्म डिवाइडेड बाय दिस टर्म, तो माइनस के साथ ये हो जाएगा -2 इंटू अल्फ़ा प्लस 2 एंड डिवाइडेड बाय अल्फ़ा प्लस 2 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +3 बाई अल्फ़ा प्लस 2. यहाँ से ये फैक्टर कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू -2 प्लस 3 टाइम्स 3 बाई अल्फ़ा प्लस 2. यहाँ एक नोटिस करने वाला चीज़ ये है कि बीटा को इंटीजर होना चाहिए, बीटा को इंटीजर होना चाहिए. बीटा मस्ट बी एन इंटीजर. इट मीन्स कि ये जो पार्ट है ये तो इंटीजर ऑलरेडी है तो इसको इंटीजर होना पड़ेगा. ये इंटीजर तभी हो सकता है कि व्हेन बीटा बिलोंग्स टू जेड इम्प्लाइज अल्फ़ा प्लस 2. ये जो डेनोमिनेटर है ये या तो इसका वैल्यू +-1 हो जाए या +-3 हो जाए, +-3 हो जाए. तभी अंडर दिस कंडीशन ये बीटा जो होगा वो एक इंटीजर हो सकता है. तो नाउ सेपरेटली कंसिडर ऑल दिस केसेस when alpha plus 2 is equal to 1 implies when alpha plus 2 is equal to +1 then alpha is equal to 1 minus 2 that is -1 which is less than 0. तो जब अल्फ़ा का वैल्यू -1 होगा तो इन दैट केस बीटा का वैल्यू दिस इम्प्लाइज बीटा का वैल्यू -2 और +3 बाई और ये वैल्यू हो जाएगा -1 दैट इज़ -1 + 2. इट मीन्स व्हाट
ये वैल्यू आएगा -2 और +3/1, दैट इज़ यहाँ पे 3/1 इज इक्वल टू 3 और 3 - 2 +1, तो ये पॉजिटिव है, बट लेना होना चाहिए कि बीटा मस्ट बी नेगेटिव। सो ये अल्फ़ा का जो वैल्यू आया -1, ये संभव नहीं है। नेक्स्ट केस, व्हेन alpha plus 2 is equal to -1. In this case, this implies alpha is equal to -3. जब कभी भी अल्फा का वैल्यू -3 होगा, इन दैट केस बीटा का जो वैल्यू होगा वो -2 +3 अपॉन -3 + 2। इट मीन्स कि ये वैल्यू हमारे पास आएगा -2 +3/-1, दैट इज -2 और 3/-1 -3 और माइनस प्लस माइनस हो -5। सो यहाँ पे दोनों वैल्यू नेगेटिव है, तो ये एक्सेप्टेबल वैल्यू होगा। नाउ तो इसलिए यहाँ पे एक वैल्यू जो हमें प्राप्त हो रहा है वो अल्फा इज इक्वल टू -3 एंड बीटा इज इक्वल टू -5। अब दूसरा केस देखते हैं, +-3 वाला केस। तो व्हेन अल्फा + 2 इज इक्वल टू +3, इन दैट केस बीटा इन दैट केस अल्फा इज इक्वल टू +1 हो जाएगा। 3 - 2 दैट इज +1, ये पॉजिटिव आ गया, बट अल्फा शुड बी नेगेटिव होना चाहिए, तो इस केस से यह केस संभव नहीं है, तो ये हम रिजेक्ट कर देंगे। इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें बीटा का कोई वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्फा का मान ही जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। नाउ कमिंग टू द लास्ट केस, -3। तो व्हेन अल्फा + 2 इज इक्वल टू -3, इन दैट केस अल्फा इज इक्वल टू -5, विच इज नेगेटिव। ये नेगेटिव है, जो कि एक्सेप्टेबल वैल्यू है। देखते हैं बीटा का वैल्यू क्या आता है। नाउ अंडर दिस केस बीटा का जो वैल्यू होगा -2 + 3/, और अल्फा का वैल्यू इस केस में हमें -5 आया है, तो हियर इज -5 + 2, तो इट मीन्स -2 + 3 अपॉन -3, ये कट जाएगा और ये आएगा -2 और -1, माइनस और प्लस माइनस होगा तो ये -3, तो यह भी नेगेटिव आ गया। तो ये दोनों वैल्यू हमारा इस केस में एक्सेप्टेबल है। देयरफॉर इस केस में अल्फा का वैल्यू -5 एंड बीटा का वैल्यू -3, विच आर एक्सेप्टेबल। तो इस तरह से ये वैल्यू संभव है, या तो अल्फा इजकल टू -3 बीटा इजकल टू -5, या अल्फा इजकल टू -5 एंड बीटा इजकल टू -3। अंडर दिस केस अल्फा in any case in either case आप can say that अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा कैन बी रिटन है। यदि ये वैल्यू मैं लेता हूँ तो ये -3 -5 प्लस -3 इंटू -5, so it gives -8 plus 15, that is +7. so this is the answer. so this expression का जो वैल्यू होगा वो +7 होगा। इस केस में भी वही वैल्यू आएगा और इस केस में भी वही आएगा, केवल ये वैल्यू इंटरचेंज करके मिला हुआ है।